Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Namra and today we will discuss Introduction to Algebra and some other algebraic expressions. Here is the list of content. Today we will discuss about objectives, Introduction to Algebra, algebraic equation and identities, basic algebraic formula, factorization of algebraic expressions and polynomials. Now come to the objectives. Students will be able to understand the language of algebra, use of letters of alphabets to represent numbers, differentiate between variables and constant, substitute numbers for letters of the alphabet in expressions and formula, manipulate simple algebraic expressions. Now, what is algebra? The basic definition of algebra is the part of mathematics in which letters and other general symbols are used to represent numbers and quantities in a formula and equation. In simple words हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम symbols का, operations का, terms का, numerics value का, quantities का उनको मिलाकर combination जो होता है और फॉर्मूला की शक्ल में या इक्वेशन की शक्ल में वो अलजेब्रा कहलाता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में और मैथमेटिकल टर्म्स में ठीक है एंड व्हाट इज algebraic expressions? A combination of constants and variables connected by the signs of fundamental operations plus division minus and multiplication is called an algebraic expressions. It is for example it is denoted by like 8 4x plus y a square plus ab square minus 2ab. From this example from where 8 is a constant and x is a variable, y is also variable. So algebraic expression is the combination of the numbers with variables. For example 4x plus 7 is an algebraic expression where x is a variable and 7 is a constant value. Here's some parts of algebraic expression. 7n plus 2. It is a term where 7 is a coefficient and is a variable and 2 is a constant. And plus is the operation like plus, minus, multiplication and negative signs is the operations. What is algebraic term? The parts of an algebraic expression separated by the operational signs plus and minus are called its terms. It is denoted in x plus y and x and y are its two terms. Letters, symbols and operation symbols are used to create words and phrases. Numerals like 0, 1, 2, 3 जो हमारे natural numbers हैं वो हमारी इसमें quantities हो सकती हैं ठीक है. Literals, the letters or alphabets that used to represent unknown numbers is called literals. ठीक है. अब algebraic expressions में वो कह रहे हैं कि हमने पढ़ा कि algebraic expressions क्या होते हैं जिसमें constant and variables का combination होता है और terms क्या होती हैं जिसमें plus, minus, multiplication, division के signs होती हैं. इन operations को represent करने के लिए ये operations use की जाती हैं इन expressions को. So it is the algebraic terms. और न्यूमरल्स कौन से होते हैं जो नेचुरल नंबर्स हैं क्वांटिटीज हैं. लिटरल्स क्या हैं लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स जो यूज़ की जाती हैं लाइक एक्स प्लस वाई एल क्रॉस बी लाइक दिस. Now come to the term, expression and equation. We can differentiate the term is a word or phrase used to describe a thing or to express a concept. Where expression it is a mathematical sentence, it doesn't have an equal sign. An equation it is a complete mathematical sentence that includes the sign of equality. जी देखिए अब टर्म क्या होती है एक सिंगल वर्ड ठीक है लाइक टू इज ऑल्सो अ टर्म. टू एक कांस्टेंट भी है लेकिन अगर जस्ट टू भी होगा तो वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा. ये 2x जो है ये भी एक टर्म है ठीक है. From in this example above example में आपको 2x plus 5 is equal to x square minus 6x ठीक है. ये complete एक equation है जिसमें से 2x हम अगर differentiate करें तो वो एक हमारे पास variable भी है x और 2x एक term कहलाती है. प्लस का साइन जो है वो इसमें ऑपरेशन है और 5 कांस्टेंट है और 2x plus 5 की अगर हम बात करें तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है ठीक है. और अगर इक्वल का साइन भी ऐड हो जाता है और आपको नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 6x नजर आ रहा है तो ये कंप्लीट एक इक्वेशन है ठीक है. और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं जिसमें इक्वल का साइन नहीं होता बल्कि प्लस माइनस के सिंबल्स या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के यूज किए जाते हैं.
और एक इक्वेशंस में ये साइन यूज किया जाता है। ये इसका थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, ठीक है। Now come to the definition of variable. What is variable? A variable is a symbol which represent a quantity that can vary. We can say anything which vary is known as variable. So there are many variables which can affect our study, or which vary with the passage of time, like weather condition is a variable. And what is the constant? A constant is a symbol which represents a specific number, a fixed quantity, a quantity that doesn't vary, जिसमें तब्दील नहीं होना, ऐसी चीज़ कांस्टेंट कहलाती है। और जिसमें चेंज या तगय्युर आता है वो वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। जैसे वेदर कंडीशन है, वो चेंज हो जाती है, उसमें वेरिएशन आती है, तगय्युर आता है। लेकिन कांस्टेंट क्या होती है? एक फिक्स क्वांटिटी होती है, अनचेंजेबल क्वांटिटी या नंबर जो है वो कांस्टेंट कहलाता है। कोफिशिएंट क्या होता है? द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल, जो मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल के साथ। लाइक 7x हमने अभी पढ़ा था, तो उसमें 7 जो था वो कोफिशिएंट और x उसमें वेरिएबल था, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ अलजेब्रा इन द प्राइमरी करिकुलम, अलजेब्रा कैन बी सीन as the development of children's ability to think and reason logically and systematically. Now come to the polynomial. What is polynomial? An algebraic expression in which the exponents of variables are all whole numbers is called a polynomial. Normally, the word poly is used for more than one things, but in algebra, polynomial represent an algebraic expression containing a single term as well as two or more than two terms. मीन्स के ऐसे algebraic expression जिसमें आपके पास exponents भी होते हैं, variables भी होते हैं, और ये algebraic expression को और whole numbers होते हैं आपके पास, वो polynomial कहलाता है। algebraic expression जो whole number में है, square की form में है, plus minus operations के साथ हैं, ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो पोलिनोमियल कहलाती हैं। और इसमें सिंगल टर्म भी यूज हो सकती है, जैसे मैंने आपको कहा था जस्ट एक 2 जो है वो भी एक टर्म है, और 2x भी एक टर्म है, ठीक है। तो सिंगल इसमें टर्म भी यूज हो सकती है, 2 टर्म्स भी यूज हो सकती हैं, मोर देन 2 टर्म्स। फॉर अ पोलिनोमियल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स मस्ट बी द होल नंबर्स। फॉर इंस्टेंट 9, 3x, x square plus 2, x cube plus 2x plus 1. These are all the examples of polynomials. All expressions and polynomials but x minus 2 plus 1, x 1 over 2 plus 3, x plus 2 are not the polynomial because their exponents are negative and 1 over 2 are not the whole number, ठीक है। अगर 1 over 2 की फॉर्म में है या नेगेटिव की फॉर्म में है तो वो जो है वो पोलिनोमियल नहीं कहलाते हैं, ठीक है, कि पावर्स जो है वो नेगेटिव नहीं होंगी इसमें। अगर x की पावर -2 है और तब भी वो एक पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, या x की पावर 1 over 2 की फॉर्म में है तब भी वो एक पोलिनोमियल नहीं होगा। Does it make sense? Okay, now come to the types of polynomial. There are three basic types of polynomial: monomial, binomial, and trinomial. In a monomial, a polynomial having one term is called a monomial. For example, 5, 3x, 2ab, these are called the monomials. And in a binomial, a polynomial having two terms is called a binomial. For example, 6x plus a minus 3b, these are the binomial. Two terms हैं तो binomial है, single term है तो monomial है, और three terms हैं तो it is called trinomial. A polynomial having three terms is called a trinomial. For example, x square plus 3x plus 5 and 2a plus 3b plus c are the trinomials. जी, अगर हम इसके एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करें, थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एग्जाम्पल को देख के। एडिशन ऑफ पोलिनोमियल में क्या है? एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ वी सब्ट्रैक्ट सेकंड पोलिनोमियल फ्रॉम फर्स्ट पोलिनोमियल वी कैन गेट द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। हमारे पास यहाँ पे टू जो है वो टर्म्स हैं, हमने फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया है और वी गेट द थर्ड टर्म। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, and hope so you will understand the concept of algebra and algebraic expression. Allah Hafiz.